নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগ 2ৰ 5 নম্বৰ লেসন সড়ক কি বাত লেসনটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিল, প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে বিচাৰি আছিলা, সময়ৰ অভাৱত মই দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি মই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তেনেহ'লে আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক উপকৃত কৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে এক শব্দ মে উত্তৰ দো। যদি তোমালোকক পৰীক্ষাটো এটা শব্দত উত্তৰ দিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখিব নালাগে, এটা শব্দতে উত্তৰটো দিলে হ'ল, মানে যিটো উত্তৰ অকল সেইটোৱে লিখি থৈ দিলে হ'ল। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কিছ আখ্যা সে বিভূষিত হে। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক কি আখ্যাৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল বা কি উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বিশ্বকবি। তেওঁক বিশ্বকবি বুলি তেওঁক মানে উপাধি দিয়া হৈছিল বা বিশ্বকবি উপাধিৰে তেওঁক বিভূষিত কৰা হৈছিল। গুৰুদেৱ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কিছ আখ্যা সে বিভূষিত হে, আনচাৰটো হ'ব বিশ্বকবি। তেওঁক বিশ্বকবি বুলি কোৱা হৈছিল, কবিগুৰু বুলিও কোৱা হৈছিল, বিশ্বকবি বুলিও কোৱা হৈছিল। নেক্সট খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ জি কে পিতা কা নাম কিয়া থা? ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিলে? আনচাৰটো হ'ব দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। যিহেতু এটা শব্দত দিবলৈ কৈছে এনেকৈ লিখি থবা। যদি সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে লিখিবা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ জি কে পিতা কা নাম দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ থা। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। বানানটো মুখস্থ কৰিবা, নাথ আৰু ঠাকুৰখিনি একেই থাকিব, ৰবীন্দ্ৰৰ জেগাত দেৱেন্দ্ৰ হ'ব। সেইটো বানানবিলাক লিখি লিখি মুখস্থ কৰিবা। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा काव्य ग्रंथ रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कीर्ति का आधार स्तंभ है? रविंद्रनाथ ठाकुৰৰ कीर्तिर आधार स्तंभ বুলি কোনখন গ্ৰন্থক কোৱা হয়? এক আনচাৰটো হ'ব গীতাঞ্জলি। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কীৰ্তিৰ আধাৰ গ্ৰন্থখন হ'ল গীতাঞ্জলি। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে সড়ক কিসকি আখৰি ঘড়িयों का इंतजार कर रहा है? সড়ক মানে ৰাস্তাৰ কথা কৈছে, ৰাস্তাই কিহৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে? কিহৰ মানে শেষ সময়ৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে। চাপ কি মানে ৰাস্তাই কৈছে যে সড়কে কৈছে যে তেওঁ কিবা নিশ্চয় সাপৰ কাৰণে তেওঁৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু সেই সাপটো এদিন নোহোৱা হ'ব বুলি তেওঁ মানে আশা কৰি আছে। নেক্সট সড়ক কিসকি তৰহ সব কুছ महसूस कर सकता है? ৰাস্তাই বা সড়কে কাৰ নিচিনাকৈ সকলো অনুভৱ কৰিব পাৰে, সকলো কথা অনুভৱ কৰিব পাৰে? আনচাৰটো হ'ব অন্ধে কি। সড়ক অন্ধে কি তৰহ সব কুছ महसूस कर सकता है। ৰাস্তাই অন্ধৰ নিচিনাকৈ সকলো কথা অনুভৱ কৰিব পাৰে। নেক্সট 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দো। সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া। কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কা জন্ম কাহা হুৱা থা? কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? आंसर हो कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोरासाको में हुआ था। कवि रविंद्रनाथ ठाकुरर जन्म होइसिले कलिकतार जोरासाकोत। कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुरर जन्म कत होइसिले? आंसरটো আমি লিখিব পাৰোঁ कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता के जोरासाको में हुआ था। कवि रविंद्रनाथ ठाकुरर जन्म होइसिले कलिकतार जोरासाको नाমৰ ঠাইত। नेक्स्ट प्रश्न ख नंबर गुरुदेव ने कब मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था? गुरुदेव माने रवीन्द्रनाथ ठाकुৰৰ কথা কৈছে। रवीन्द्रनाथ ठाकुरे केতিয়া मोहनदास करमचंद गांधीक বা गांधीजीक महात्मा उपाधिৰে বিভূষিত কৰিছিল? शांति निकेतन में आने पर गुरुदेव ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में संबोधित किया था। शांति निकेतनলৈ আহোঁতে গুৰুদেৱে মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধীক মহাত্মা নামেৰে সম্বোধিত কৰিছিল। শান্তি নিকেতন আছিল তেওঁৰ শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ এটা, যিটোৰ স্থাপনা কৰিছিল কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে। আৰু যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে স্থাপন কৰা সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক কেন্দ্ৰ শান্তি নিকেতনলৈ আহিছিল তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মোহনদাস কৰমচাঁদ গান্ধীক মানে আমাৰ জাতিৰ পিতা গান্ধীজীক মহাত্মা উপাধিৰে সন্মানিত কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন গ নম্বৰ सड़क के पास किसी कार्य के लिए फुर्सत नहीं है? ৰাস্তাৰ ওচৰত কি কাৰ্যৰ কাৰণে সময় নাই?
सड़क के सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल खिलाने का फुर्सत नहीं है। ৰাস্তাৰ মানে চিৰহানে মানে মূৰৰ ওচৰত এটা সৰু নীলা ৰঙৰ বনফুল মানে ফুলিব দিয়াৰো ৰাস্তাৰ কি নাই, সেইটোৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ ওচৰত সময় নাই বা আহৰি নাই। सड़क के पास किस कार्य के लिए फुर्सत नहीं है? सड़क के सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल खिलाने का फुर्सत नहीं है। মানে মূৰৰ শিতানত মূৰৰ ওচৰত এটা সৰু বনফুল ফুলিব দিয়াৰো মানে আহৰি নাই বা সময় নাই। सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना किससे की है? ৰাস্তাৰ যে অনবৰত শুই থাকিব লাগে এটা হেৰিতে, সেইটোৰ তুলনা কিহৰ লগত কৰিছে? सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना চিৰনিদ্ৰিত সুদীৰ্ঘ अजगर से की है। ৰাস্তাই নিজৰ নিদ্ৰাৱস্থা মানে অনবৰত যে শুই থাকে এটা মানে ছাইডতে শুই থাকে ৰাস্তাই, সেইটোৰ তুলনা কিহৰ লগত কৰিছে? सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना চিৰনিদ্ৰিত সুদীৰ্ঘ अजगर से की है। ৰাস্তাই নিজৰ নিদ্ৰাৱস্থাৰ তুলনা সদায় শুই থকা সুদীৰ্ঘ অজগৰ ডাঙৰ অজগৰ এটাৰ লগত তুলনা কৰিছে। सड़क ने अपनी निद्रावस्था की तुलना चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर से की है। नेक्स्ट, सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर क्या नहीं डाल सकती? ৰাস্তাই নিজৰ শুকাই যোৱা পথত মানে কি পেলাব নোৱাৰে? सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास नहीं डाल सकती। सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास नहीं डाल सकती। এই নিজৰ ৰাস্তাত কি পেলাব নোৱাৰে? সেউজীয়া ঘাঁহ পেলাব নোৱাৰে। सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर क्या नहीं डाल सकती? सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास नहीं डाल सकती। सड़क अपनी कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास नहीं डाल सकती। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, अति संक्षिप्त उत्तर दो। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? रविन्द्रनाथ ठाकुৰৰ प्रतिभार परिचय কি ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, निबंध, संगीत, समाज सुधारक, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि क्षेत्रों में मिलता है। रविन्द्रनाथ ठाकुৰৰ प्रतिभाৰ পৰিচয় কি ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়? रविन्द्रनाथ ठाकुৰৰ प्रतिभाৰ পৰিচয় কবিতা, গীত, কাহিনী, উপন্যাস, নিবন্ধ ৰচনা, সংগীত, সমাজ সুধাৰক হিচাপে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय किन क्षेत्रों में मिलता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की प्रतिभा का परिचय कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, निबंध, संगीत, समाज सुधारक, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति आदि क्षेत्रों में मिलता है। তেওঁ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰতিভাসমূহ আমি উপৰোক্ত যিবিলাক ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত পোৱা যায়। नेक्स्ट प्रश्न, शांति निकेतन के महत्व पर प्रकाश डालो। शांति निकेतনৰ महत्বৰ ওপৰত লিখিবলৈ কৈছে। शांति निकेतन एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र था। शांति निकेतन আছিল এটা শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ। আগতেও মই কৈছোঁ, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। ইয়াক কোনে স্থাপন কৰিছিল? रविन्द्रनाथ ठाकुरे। आगे चलकर यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। আগলৈ ই বিশ্ব ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিলে। শান্তি নিকেতন এক শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ था। শান্তি নিকেতন এটা শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আছিল। जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। ইয়াৰ স্থাপন কৰিছিল কোনে? रविन्द्रनाथ ठाकुरे। आगे चलकर यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। আগলৈ ই বিশ্ব ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিলে। মানে বিশ্ব ভাৰতী যিখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইখনৰ পুৰণি নাম কি আছিলে? শান্তি নিকেতন। প্ৰথমে বিশ্ববিদ্যালয় নাছিলে, প্ৰথমে এটা শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আছিলে যাৰ জন্ম দিছিলে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে, আৰু পিছলৈ ই বিশ্ব ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয় নামেৰে জনাজাত হৈ পৰিছিলে। আৰু মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া শান্তি নিকেতনলৈ আহিছিলে তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে গান্ধীজীক মহাত্মা উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। नेक्स्ट प्रश्न, सड़क साप मुक्ति की कामना क्यों कर रही है? ৰাস্তাই সাপ মুক্তি, কোনোবাই তেওঁৰ যিটো সাপত মানে কোনোবাই সাপ দিছে ৰাস্তাক, সেই সাপটোৰ পৰা মুক্তি পাব বুলি মানে অভিশাপৰ কথা কৈছে। অভিশাপটোৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ কামনা কিয় কৰি আছে?
हमेशा से सड़क स्थिर है, अविचल है, एक ही करवट सो रहा है, इसलिए सड़क साप मुक्ति की कामना कर रही है। সদায় ৰাস্তাই কি হৈ আছে, স্থিৰ হৈ অবিচল হৈ পৰি আছে, এটা ছাইডতে শুই আছে, এটা ফাল হৈয়ে শুই থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু এনেকৈ শুই শুই কি হৈছে, ৰাস্তাৰ আমনি লাগিছে। সেইকাৰণে ৰাস্তাই মানে তেওঁৰ সেই ৰাস্তাই যিটো অভিশাপ পাইছে বুলি কৈছে, কোনোবাই অভিশাপ দিছে, এই অভিশাপটোৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ কামনা কৰি আছে। सड़क साप मुक्ति की कामना क्यों कर रही है? हमेशा से सड़क स्थिर है, अविचल है, एक ही करवट सो रहा है, इसलिए सड़क साप मुक्ति की कामना कर रही है। हमेशा से सड़क स्थिर है, अविचल है, एक ही करवट सो रहा है, इसलिए सड़क साप मुक्ति की कामना कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, सूखी घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क क्या समझ जाती है? সুখৰ ঘৰ গৃহস্থী থকা মানুহৰ ভৰিৰ শব্দ শুনি ৰাস্তাই কি বুজি পায়? सुख के घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क समझ जाता है कि वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। সুখৰ ঘৰ সংসাৰ থকা মানুহৰ ভৰিৰ শব্দ শুনিলে ৰাস্তাই বুজে যে তেওঁ কি কৰে, প্ৰতিটো খোজতেই কি কৰে, সুখৰ ছবি আঁকে আৰু আশাৰ বীজ ৰোপণ কৰে। सुख की घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क क्या समझ जाती है? सुख के घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क समझ जाता है कि वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। सुख के घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के पैरों की आहट सुनकर सड़क समझ जाता है कि वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है और आशा की बीज बोता है। नेक्स्ट प्रश्न, गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क को क्या बोध होता है? घर नथका মানুহৰ ভৰিৰ শব্দ শুনিলে ৰাস্তাই কি ভাবে? आंसर लिखिब पारो आमी, गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क सोचता है कि उसके कदम में आशा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसके कदमों में सड़क की सूखी हुई धूल और सूख जाती है। যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ নাই সেইবিলাক মানুহৰ ভৰিৰ শব্দ শুনিলে ৰাস্তাই ভাবে যে তেওঁলোকৰ মানে খোজত কোনো কি নাই, আশা নাই, কোনো অৰ্থ নাই। যেনেকৈ ৰাস্তাৰ ধূলিবিলাক বেছি শুকান হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ ভৰিৰ খোজত সেই ধূলিবোৰ আৰু বেছি শুকান হৈ যায়। गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क को क्या बोध होता है? गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क सोचता है कि उसके कदम में आशा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसके कदमों में सड़क की सूखी हुई धूल और सूख जाती है। एक बार सबा, गृहहीन व्यक्ति के पैरों की आहट सुनने पर सड़क सोचता है उसके कदम में आशा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसके कदमों में सड़क की सूखी हुई धूल और सूख जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को क्यों ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती? रास्ताय निजर ऊपरत पड़ा चरण चिन्हक মানে খোজৰ চিহ্ন কিয় বেছি, এটা খোজৰ চিহ্ন বেছি সময়লৈ কিয় চাই থাকিব নোৱাৰে? क्यों नवारे? सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती क्योंकि उसके ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं। बेसी समय चाই থাকিব নোৱাৰে कारण बहुतो খোজৰ চিহ্ন ৰাস্তাৰ সদায় পৰি আছে। पर नए पाव आकर पुराने चिन्ह को पोच देते हैं। नतुन भरि नतुन खोज आহি আগৰ যিটো खोज আছে সেই खोजটো নোহোৱা কৰি পেলায়। सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को क्यों ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती? सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती क्योंकि उसके ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, पर नए पाव आकर पुराने चिन्ह को पोंछ जाते हैं। अगले बार सवा, सड़क अपने ऊपर पड़े एक चरण चिन्ह को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती क्योंकि उसके ऊपर लगातार चरण चिन्ह पड़ रहे हैं, पर नए पाव आकर पुराने चिन्ह को पोंछ जाते हैं। नतुन नतुन खोजे आহি पुरानी যিবিলাক खोज আছে সেইবিলাকক মচি পেলাই বা মোহাৰি পেলাই। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क को कौन से मनोभाव बनते हैं? যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাস্তাত খোজ দিয়ে তেতিয়া ৰাস্তাই কি ভাবে?
बच्चे जब कोमल पाँवों से सड़क के ऊपर चलते हैं तब अपने को सड़क बहुत कठिन अनुभव करती है। उसे लगता है कि बच्चों के पाँव में लगती होगी। যেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ কোমল ভৰিকেইখনেৰে ৰাস্তাত খোজ দিয়ে তেতিয়া ৰাস্তাই নিজকে বহুত কঠিন যেন অনুভৱ কৰে। এনেকুৱা লাগে যে ৰাস্তাটো বহুত কঠিন হয় আৰু সেই সৰু বাচ্চাবিলাকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যি কোমল ভৰি সেই কোমল ভৰিত নিশ্চয় সিহঁতে কি পায় সেই কঠিনতাৰ কাৰণে সিহঁতে চাগে আঘাত পায় বা দুখ পায়। बच्चों के कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क में कौन से मनोभाव बनते हैं। बच्चे जब कोमल पाँवों से सड़क के ऊपर चलते हैं तब अपने को सड़क बहुत कठिन अनुभव करती है। उसे लगता है कि बच्चों के पाँवों में लगती होगी। नेक्स्ट प्रश्न, किस लिए सड़क को न हंसी है न रोना। किहर कारणे रास्ताय न हाहे और न कांदे। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ सड़क के ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है। इसलिए सड़क को न हंसी है न रोना। रास्ताय কৈছে যে अमीर और गरीब, धनिया होक बा दुखियाई होक, जन्म और मृत्यु, जन्मय होक बा मृत्युए होक, जिए নহওক किय सब कुछ सकलो सड़क के ऊपर रास्तार ऊपर एक ही सांस में एटा उशाहते धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है। एक उशाहते धूली निचिनाকৈ सब उड़ी गई আছে। সেইকাৰণে रास्ताय हाहिও नाथाके कांदिও नाथाके। किसलिए सड़क को न हंसी है न रोना। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ सड़क के ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है। इसलिए सड़क को न हंसी है न रोना। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ सड़क के ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता चला जा रहा है। इसलिए सड़क को न हंसी है न रोना। नेक्स्ट, राहगीरों के पाँव के शब्द को याद रखने के संदर्भ में सड़क ने क्या कहा है। राहगीरों माने पथिक, যিবিলাকে ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি যায়, বাটৰুৱা পথিক। এই পথিকসকলৰ খোজৰ শব্দ মনত ৰখা সন্দৰ্ভত रास्ताय की কৈছে। राहगीरों के पाँव के शब्द को याद रखने के संदर्भ में सड़क ने कहा है कि उन पाँवों की करुण नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है। কৈছে যে যিবিলাক ৰাস্তাৰে মানুহ গৈছে সেই মানুহবিলাকৰ কৰুণ নুপুৰৰ ধ্বনি এতিয়াও কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনত পৰে। लेकिन उसके लिए शोक मनाने के लिए सड़क के पास छुट्टी नहीं है। किन्तु এইবিলাক কথা লৈ কি কৰিবলৈ কান্দি থাকিবলৈ ৰাস্তাৰ ওচৰত কি নাই, এতিয়া সময় নাই। राहगीरों के पाँव के शब्द को याद रखने के संदर्भ में सड़क ने कहा है कि उन पाँवों की करुण नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है, लेकिन उसके लिए शोक मनाने के लिए सड़क के पास छुट्टी नहीं है। किन्तु সেইবিলাকৰ কাৰণে কান্দি থাকিবলৈ ৰাস্তাৰ ওচৰত সময় নাই। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো বহুত দীঘলীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে 3 নম্বৰলৈ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। বাকী 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ ব্যাখ্যা সেইটো এটা ভিডিঅ' হ'ব আৰু গ্ৰামাৰৰ ছেকশ্যনটোৰ আৰু এটা ভিডিঅ' হ'ব। মানে এইটো লেছনৰ আৰু দুটা ভিডিঅ' আহিব। কালি এটা পৰহিলৈ এটা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, ভাল পালে কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।